हर लोंडे को ना इंडिया में एक चीज़ समझनी पड़ेगी गुरु, तुम लोगों को फ्रेम में रहना पड़ेगा। तू ज़्यादा बोलने से चीखने से तेरी बॉडी ज़्यादा, इट डजंट रियली मैटर अगर तेरा फ्रेम नहीं है। सो हे मैन, यू कैन अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं एक बताने वाला हूँ मेरे भाई, कि नो मैटर भाई तेरा तू कितना भी जैक्ड हो, यू नो, तेरे पास यू हैव लाइक यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो एब्सोल्युटली वॉर के लिए रेडी हो तेरे लिए। बट अगर तेरे पास फ्रेम नहीं है, यू अंडरस्टैंड इट, यू डोंट हैव फ्रेम, मतलब तू कंट्रोल्ड नहीं है, तेरी बॉडी और तेरा माइंड कंट्रोल्ड नहीं है। कोई भी आजू बाजू वाला बंदा, सर्कमस्टांस, मतलब जैसा भी माहौल होता है उस चीज़ से तू हिलने लग जाता है, तू शेक रिएक्ट करता है। लाइक एब्सोल्युटली नथिंग, टॉयज है क्या तू भाई, क्या खलूना है? लाइक जेन्युइनली देयर आर सम गाइस, दे आर लाइक सो रिएक्टिव ऑल द टाइम। भाई तुझे पता है ना, जो बड़ी पावर होती है वो रिएक्ट नहीं करती है, वो नहीं करती रिएक्ट, दे स्टे वेरी calm। गुरु उनकी आवाज देखना, पॉज, दे टेक पॉजेस। यस सर, व्हाट हैपेंड? अगर गाड़ी ठुक गई ना, अभी फॉर एग्जांपल यू ड्राइविंग अ कार, देन इवेंचुअली देयर इज समबडी हु स्लैम्ड विद योर कार, यू डोंट डू नथिंग। लाइक बोलने से कुछ नहीं होगा, चीख क्यों रहा है उसके ऊपर, क्यों लड़ क्यों रहा है, पागल बच्चा है क्या? व्हाट एग्जैक्टली यू आर फकिंग डूइंग? देयर आर सम पीपल दैट लिटरली स्टार्ट टू फाइट इन अ रोड रेज। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? अगर वो चीज तू काम मैनर में करेगा ना, लाइक जेन्युइनली इन अ मोस्ट काम वे, देन इवेंचुअली द नेक्स्ट पार्टी, गुरु वो तेरी एनर्जी, वो तेरा ऑरा फील करेंगे मैन। Who is this guy? You understand it? There comes a time that you have to be reactive, but mostly you don't have to react. That defines कि गुरु तू पूरा तेरे पास फ्रेम है, इट मीन्स यूर लाइक तेरी बॉडी माइंड का एक सेंटर पॉइंट है, और तेरा जो जेन्युइनली तू कंट्रोल्ड किया हुआ है। मतलब कोई आजू बाजू वाला कुछ भी बोले, जैसे सिचुएशन हो, दे कैन फकिंग चेंज योर माइंड, यू नो, दे कैन चेंज योर एनर्जी, दे कैन नॉट, लाइक कि तू हंसता है ना गुरु, तो वो हंसी जो है ना वो लोगों को अर्न करनी पड़ती है कि तू हंस रहा है। You understand it? It's simple. There are some guys, guru, वो हमेशा बोलते ही रहते। Like you go to the workout, you go to the, like, you know, your academics, you go outside, they are like talking a lot. What the fuck? And then eventually they are the most unserious guy. You don't have to talk like loudly. Like it's not like fucking G shit. Understand it? तेरे को नहीं करना है गुरु जोर शोर से बोल के नहीं तेरे को बताना है कि तू थोड़ा हाँ वो है चैट है, fuck it, doesn't really matter. You know, like भाई, I'm saying it with a fact, bro. You don't have to shout. You don't need to shout. The realest power comes with the most profound control. मतलब अगर कोई इंसान, कोई भी जैसा भी माहौल हो और तेरे को तू इवेंचुअली रिएक्ट करे उस सिचुएशन में, तो तू गुरु चाहे 40-50 साल का भी हो ना, तो तेरे को, आई डोंट थिंक दैट you know how to live in this life. Generally, a man can only be defined by his frame. If he has a like controlled frame, then eventually he can run the world. क्योंकि फ्रेम जिन लोगों के पास होता है, they are the great leader. They know how to control situation. क्योंकि situation उन्हें control नहीं करते, they control the situation. They control themselves, then they eventually control the situation. For example, there is some guy who is saying shit about you. You know, if you're gonna say shit back, how does it gonna help? Unless like, मतलब genuinely अगर तेरा फ्रेम वो तोड़ रहा है ना, तो then eventually you can beat him. But if he's just gonna say shit, और तुझे लगता है कि वहां तेरे को अपना फ्रेम से हट के थोड़ा निकलना पड़ेगा, for exactly you should know, like अगर तू मारना भी चाहता है तो it has to be most dedicated punch that you ever gonna do, and you do it with a pure motivation. You understand it? If you're gonna punch him, then punch him with the heart. That eventually कि कोई ऐसा माइक्रोसेकंड लीकेज ना हो तेरे से कि गुरु वो मैंने गलती कर लिया पंच में, नहीं, इट्स ऑल कंट्रोल्ड. दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फ्रेम कंट्रोल्ड, दैट यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योरसेल्फ. अंडरस्टैंड इट? इट्स सिंपल. अगर तू रिएक्शन भी देना चाहता है, देन इवेंचुअली यू मस्ट नो दैट हाउ यू गोना रिएक्ट. पॉजेज ले, आई कॉन्टैक्ट अच्छा दे, बॉडी लैंग्वेज हमेशा फर्म रख. दैट इज द वे टू विन ओवर द सिचुएशन. there कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं लाइफ में वेर यू हैव टू, लाइक वो स्टेप 2 होता है फ्रेम का, जहाँ तुझे कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी से शिट, देन इवेंचुअली यू मेक देम रियलाइज हु दे सेड शिट टू.
एग्जैक्टली यू gotta punch them. Simple, right? क्योंकि अगर तुझे लगता है कि वो जिंदगी में तू उसको पहली बार ही मिलने वाला है और वो बोल के ऊपर से चले गया, देन इवेंचुअली उसको तुझे मोड़ना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा तुझे कि उसने किससे पंगा लिया और किसको ऐसी चीजें बोली. अगर तुझे लगता है वो वर्थ है सिचुएशन का, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू. दैट्स इट्स ऑल अबाउट फ्रेम. अ मैन कैन बी ट्रूली measured with his controlled over himself. मतलब जितना तेरा कंट्रोल्ड होगा अपने आप के ऊपर, उतना ही तेरा कंट्रोल्ड है अपने विजन के ऊपर, इतना ही तेरा कंट्रोल्ड है पूरे सिस्टम के ऊपर जिस सिस्टम को तू बनाया, जिस सिस्टम में तू रहता है. देन इवेंचुअली एवरीबडी वुड सीक यू मैन. यू आर लाइक द लीडर, यू आर लाइक द मैग्नेट. दैट्स इट. देखा है ना गुरु, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ मूवीज, लाइक गैंगस्टर माफिया, दे ऑलवेज लाइक वो तब ऐसी नॉर्मल पॉज वे में सिचुएशन डील करते हैं गुरु. इट्स जस्ट लाइक बटर को काटना नाइफ से. दैट्स हाउ दे डू इट. वो मैजिक, वो ऑरा, वो चार्म, वो क्रिएट, वो सब आता है गुरु फ्रेम से. और अगर तेरा फ्रेम कंट्रोल्ड में है, अगर तू अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखेगा, देन इवेंचुअली तू भी सिचुएशन को बटर की तरह काटेगा और तेरी लाइफ बहुत सेक्सी हो जाएगी. बंदियां, दे वुड बी सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तू वो लोंडा होगा भाई जो जहां चलेगा तू रिएक्शन पुल करेगा. यू डोंट से शिट, बट दिस इज द एनर्जी दैट यू वांट टू क्रिएट बाय योर फ्रेम. सो इट्स सिंपल. अगर तू लोंडा है तो तेरे को अपने फ्रेम पे वर्क करना पड़ेगा. सो देयर आर फ्यू वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट विद. लाइक फर्स्ट इज you just have to control your mind. You have to stay calm. Understand it? अगर प्रॉब्लम में ज़्यादा डेल्व होगा तो then eventually you would become the problem. So you need to understand it that you are the controller of the problem. You don't have to become another problem. So your frame won't be molded with the situation. Simple. It's just control your mind, control yourself, and your frame would be stay sharp like this painting. And nobody can say shit about you. Nobody can like hurt you in this world. And the frame at like certain degree you have to be cool, to be very honest. Like they're like, yeah, you have to be cool. Like अगर ये जो frame तू देख रहा है पीछे, अगर इसको heat produce करेंगे then eventually it would melt, right? So you gotta give it that like fucking that temperature जिसमें वो boss की form में हो. So yeah, fuck it. No matter how much heat it is, I'm gonna stay cold. So again, I tell you man, every man in India कि गुरु, हर लोंडे को ना इंडिया में एक चीज़ समझनी पड़ेगी गुरु, तुम लोगों को फ्रेम में रहना पड़ेगा. तू ज़्यादा बोलने से, चीखने से, तेरी बॉडी ज़्यादा, इट डजंट रियली मैटर. अगर तेरा फ्रेम नहीं है तू एक बच्चे की तरह लगेगा. और दैट एज अ मैन दैट्स लाइक हाउ यू कैन बी डिफाइंड. तेरा एटीट्यूड, वो फिर एटीट्यूड दिखता है गुरु. व्हाट एग्जैक्टली विद दिस फकर इज मैन, इज नॉट सेइंग शिट. He's so minding, he's on his business. He doesn't really fuck with everybody. Then eventually everybody would seek you. What the mystery that you have in yourself. So, frames gives you a mystery because you don't really talk shit unless it's not required. You don't react unless it's not required. You stay locked in towards your mission, plan, and then eventually you become a man, a pure and complete frame. So make sure कि अपने frame पे work कर. और जब तू frame पे work करेगा गुरु, तेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. That's the message for all my Indian brother, and for all the all the viewers, those who are watching from India, Bangladesh, Pakistan, everywhere. Thank you guys, and that's it. A man can be truly defined by his frame.